So there appeared some conflict in interest between the British capitalist class and the Indian government and the Indian government. British capitalist class preferred, right? British capitalist class preferred to keep the rate of land revenue, to keep the rate of land revenue. British capitalist class preferred or choose to keep the rate of land revenue, keep the rate of land revenue at lower level, at lower level, at lower level, so that so that India could have so that India could have so that India could have sufficient purchasing power, sufficient purchasing power to purchase British product, sufficient purchasing power to purchase British product, sufficient purchasing power to purchase British products. But but Indian government, Indian government was having its own compulsion. But Indian government was having its own compulsion. Compulsion माने मजबूरी, तार भी मजबूरी थिला तार रेवेन्यू से नेबा को पड़ुथला से. So lastly it was decided right, so lastly it was decided to abolish the role of jamidars, to abolish the role of jamidars. Lastly it was decided to abolish the role of jamidars. So तांके देखिए कि परमानेंट सेटलमेंट रे जमीदार्स माने धूम पैसा छापुचंदी एंड पीजेंट्स माने गरीब हो जाउचंदी. सो एबे नुआ लैंड रेवेन्यू सिस्टम रे तांके कहले कि जो जमीदार्स मान को आ रखिबा नै, मिडिल मैन को आ रखिबा नै, मिडिल मैन को रखी देले पीजेंट्स मानकर पैसा कमी जाउछ. सो बोथ तांके चाहुथले कि इंडियन गवर्नमेंट रो भी पैसा न कमो एंड ब्रिट सेमानकर परचेजिंग पावर भी बढ़ो. तो मिडिल मैन मान को काटी दियो. तो मिडिल मैन थिले जमीदार. सो जमीदार मान को एबोलिश करिया अछि. So lastly it was decided to abolish the role of jamidars. Okay. से टाइम रे गोटे इकोनॉमिस्ट थिले डेविड रिकार्डो. एंड रिकार्डो एक्चुअली ये जिंस को एक्सप्लेन करथिले. ओके. एंड सी तांकर जो थ्योरी को ही डेविड रिकार्डो रेंट थ्योरी भी कहै जाउछ. एंड सी थ्योरी रे तांके ये जिंस देखले कि अबाउट दिस परचेजिंग पावर, हाउ परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, सो गुटे प्रोडक्ट रो कंजम्पशन कमी जाय, सेटा तांके बतेले. सो राइट देन इवन द रिकार्डो रेंट थ्योरी, राइट, इवन the Ricardo rent theory, even the Ricardo rent theory preferred to tax jamidar, preferred to tax the jamidars. तो तांके कहले कि जमीदार जते पैसा अछि तांको टैक्स करो, जे तांके बहुत पैसा मिललानी तांको. सो इवन Ricardo rent theory preferred to tax the jamidars. Okay, next slide. Therefore in both the system, both the system माने रेवतवारी system and महलवारी system. Okay, therefore in both the system रेवतवारी and महलवारी, ब्रैकेट लिखंतु, रेवतवारी and महलवारी, जमीदार्स and middlemen
did not have any important role. I repeat, therefore in both the system bracket रे लिखंतु रेवतवारी and महलवारी, जमींदार्स and middlemen, जमींदार्स and middlemen did not have important role, did not have important role. They did not have important role. Important roles. Did not have important role. Full stop. Next, give the heading Rayotwari system. तो रेतवारी सिस्टम रे कौन के मिडिलमैन आउ रही ओके। तो फास्ट रेतवारी सिस्टम को तो देखिए ब्रिटिश मानकर जेतिकी भी एरिया थिला, ब्रिटिश मानकर जेतिकी भी एरिया थिला तार एप्रोक्सीमेटली 51% एरिया रे तांके रेतवारी सिस्टम को तांके इम्प्लीमेंट करथिले। तो से बने वास्ट एरिया रे तांके बहुत बड़ एरिया रे तांके रेतवारी सिस्टम को अप्लाई करथिले। ओके, रेवतवारी सिस्टम रो जदि इतिहास देखिए, इट वाज एक्चुअली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय रीड। रीड एक्चुअली याको 1792 रे बुझिया चेष्टा करंतु, मुठी ओरिजिन को जाउची, बैकग्राउंड को जाउची। रीड एक्चुअली 1792 रे याको फर्स्ट 12 महल गोटे जगह थिला, 12 महल, 12 महल रे आपको इम्प्लीमेंट करिथिले। ओके, बट रीड ताकू एते कंक्रीट फॉर्म रे ताकू इम्प्लीमेंट करि नथिले। ओके, रीड ताकू एते भलो भाबरे इम्प्लीमेंट करि नथिले। सो देन कम आवर मुनरो, मुनरो बाबू, एंड दिस मुनरो सी 1809-10 ऑनवर्ड्स ताकू कोरे कंक्रीट शेप देले रेवतवारी सिस्टम को एंड आकू डिफरेंट डिफरेंट जगह रे इम्प्लीमेंट कले। काकू रेवतवारी सिस्टम को मुनरो 1810 रे टिके मॉडिफिकेशन करिकी तापरे बहुत गुड़ा एरिया मलाबार, डिंडीगुल, कनारा, कोइंबटोर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया रे तापरे मुनरो ताको इम्प्लीमेंट करिथिले। ओके, सो धीरे धीरे तापरे आउ थरे रेवतवारी सिस्टम को नुआ नुआ सब ऑफिसर्स माने आसिले, तारे पुणी आउ थरे मॉडिफिकेशन जाको कले। लास्टली हमको देखिया पे मिलला कि ये टोटली जो सिस्टम थिला रेवतवारी सिस्टम सीधा आपण को मेनली बॉम्बे एंड मद्रास रे इम्प्लीमेंटेशन पूरा बॉम्बे वाला जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एड लिखंतु। तो टोटली हमर जो तापरे धीरे धीरे से जेतोले तार मॉडिफिकेशन करी गोटे कंक्रीट शेप आउ गोटे भलो कंक्रीट शेप रे जेतोले पळे आसबो एंड जेतोले से माने चाहुतले कि जेते नुआ नुआ एरिया अछि तारे कूल एंड रेवेन्यू सिस्टम करबा इन द साउथ रे स्पेशली। तो से साउथ रे तांके एक्चुअली मेनली जो मद्रास प्रोविंस एज वेल एज बॉम्बे प्रोविंस, बोथ प्रोविंस रे बहुत गुड़ा एरिया भी ये प्रेसिडेंसी रे बहुत गुड़ा एरिया आसला। बोथ प्रोविंस रे से माने ये जो रेवतवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करिवे। ओके, एंड ये जिनस ये हेबो कोन फि द फीचर्स कोन थला रेवतवारी सेटलमेंट रे कोन हेबो मेनली डायरेक्टली जो रयत रयत माने होचंती पीजेंट्स बा जे कि चाष करे निजे तार जमी रे से चाष करूथवा लोक सहित डायरेक्टली सेटलमेंट करा हबो कि तमे एतिकी डेट रे एतिकी मास को तमे हमकु आसिकी रेवेन्यू तमे दउथबो। तो मिडिल मैन एटी नाहंती, डायरेक्टली विथ द पीजेंट्स और डायरेक्टली विथ द रयत द सेटलमेंट विल बी देयर। ओके, एंड जदि से जदि करि पारला नाही सो तार पुणी से भी सेमती थिला कि तार जते भी जगह से कल्टीवेशन करछि सेटा पळेबो। ओके, एंड इवन
जदि जो लैंड रो ओनर मेनली जो टेनेंट्स थिले आगे टेनेंट्स माने जे कि तांकर जमी रे काम करथिले पूर्व रे तांको ही कह दिले कि यू आर नाउ द ओनर केही भी जमीदार फमीदार नहीं बिकज ए जगह रे जमीदार थिले भी नहीं मद्रास एंड बॉम्बे रे थिले भी नहीं आ जदि भी रही थांते ताको एबोलिश बा ताको एलिमिनेट करिवार ही तांके भाबुथिले ओके सो ये जो टेनेंट्स माने जे थिले से टेनेंट्स को कहले कि यू आर नाउ द ओनर ऑफ द लैंड ओके तमे हो तमे ओनर एंड तांके कहले कि डायरेक्टली तुम सहित ही आम लैंड रेवेन्यू रे सेटलमेंट करिवु डायरेक्टली इंडिविजुअल पीजेंट सहित एंड तांके कहले कि तुम जदि चाहूछ यू कैन सेल द लैंड वाज आल्सो सेलेबल तो तुम ओनर ही गला एबे तुम बिकी भी पारिबो बिकिला परे तुमर रेस्पोंसिबिलिटी भी बढ़ेला बट नुआ रेस्पोंसिबिलिटी नुआ ओनर पाखरे पळे आसीबो एंड ताकू तापरे सीधा कंटिन्यू करिया पड़ियो सेठी लैंड रेवेन्यू देबा को पड़ियो एंड लैंड वाज आल्सो मेड सेलेबल बट टेनेंट्स को तांकर ओनरशिप मिलला ओके एंड इन दिस सेटलमेंट सिस्टम द कम्युनिटी लैंड mainly the community land जो थिला mainly pasture lands ponds and all the community land were placed under the ownership of government रो ओनरशिप रे ही कम्युनिटी लैंड रहिबो इंडिविजुअल ओनरशिप कार रहबो ओके सो ई सिस्टम रे रवि जदि आपण एनालिसिस करिवे अबाउट इट्स इम्पैक्ट एंड ऑल so it also not much successful if you see and one more thing one important provision was कि earlier permanent settlement रे गोटे थिला कि the rate of revenue could not be revised because rate of revenue को गोटे थोड़ा फिक्स कर देथिले तो सी भूल को आउ एठी दोहराइले नै तांके कहले कि the rate of land revenue right the rate of land revenue could be revised ने परे जदि प्रोडक्शन बढ़ुची सो आमे ताकू से हिसाब रे लैंड रेवेन्यू को भी रिवाइज करि परिया ताकू बढ़े परिया द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू कुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम the rate of land revenue could be revised from time to time the rate of land revenue could be revised from time to time okay now write the objectives what were the objectives behind this Rayotwari settlement okay right fatafat the Madras presidency मद्रास प्रेसिडेंसी जो आमर साउथ रे थिला से सब बेले किछि ना किछि युद्ध रे से लागि थिवो साउथ रे किछि ना किछि युद्ध चलथिवो तार एंड से सब बेले किछि ना किछि युद्ध रे लागि कि रहउतला सो ताकू बेसी रिसोर्सेस दरकार पड़तला बेसी रिसोर्सेस बेसी पैसा बेसी सैन्य सामंत बेसी हेल्प बेंगलुरु दरकार पड़तला तो मद्रास रिसोर्सेस नीडेड लार्जर रिसोर्सेस Madras presidency needed larger resources as it was always involved into continuous war तो ताको बेसी पैसा दरकार पड़तला तो बेसी पैसा तो दरकार पड़ूला तो मिडिल मैन को काटी देले से माने मिडिल मैन को काटिला परे भी एमानकर एते पैसा दरकार पड़ूला कि एमाने जो रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एते एक्सऑर्बिटेंट हाई रखुतले कि पीजेंट्स मान को लागिला कि ई ब्रिटिश गवर्नमेंट रो तो भलो जमीदार थिले जमीदार माने भलो जमीदार तो सेठी नथिले अवश्य बट जदि कंपेयर करा जीवो जमीदार एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रूव्ड टू बी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ जमीदार सो दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि सब बड़े मद्रास प्रेसिडेंसी कंटिन्यूअस वार इन्वॉल्व थिला ताको लार्जर रिसोर्सेस दरकार थिला
सो केमिति से पैसा आसीबो तापाई एक्चुअली सिस्टम रेवत वाली सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा जाइथिला. ओके, द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज द कंपनी was disillusioned with the system of disillusioned with the system of permanent settlement. जेहेतु permanent settlement रे सेमानंको एते फायदा है नथला ब्रिटिश कंपनी को, बिकॉज परचेजिंग पावर ही कमी गला बिकॉज ऑफ द जमींदार्स एंड ऑल. सो द कंपनी वाज डिसइल्यूजन विथ द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. सो परमानेंट सेटलमेंट आउथरे ताको इंप्लीमेंट कले नहीं, गोटे नुआ सिस्टम गोटे इंप्लीमेंट कले. एंड इफ यू से व्हाई कोन पे एक्चुअली एटा इंप्लीमेंट हैला से जगह रे कोन पे मिडिल मैन को एक्चुअली एब्सेंट माने एबोलिश कले सेटा तो हम देखिलु. बट सेठी एक्चुअली हमर जो वेस्ट साइड मेनली इंडिया रो वेस्टर्न साइड एंड द साउदर्न साइड रे को भी जमीदार नथिले, जेंति हमर बेंगल रे जमीदार थाने थिले. बट एठी एक्चुअली नेचुरली ही जमीदार थाने नथिले. आ जदि भी किछ एरिया रे थिले तो ताकू तांके एलिमिनेट कर देथिले. ओके, सो राइट इन वेस्टर्न एंड साउदर्न India, in western and southern India, there was not any class like zamindars. In western and southern India, there was not any class like zamindar class. कौन है? Next, right, impact. Right, impact कौन? देखो, the government itself proved to be the worst type of zamindar. The government itself proved to be the worst type of zamindar. तो एमाने कौन करते ब्रिटिश गवर्नमेंट इवन घास भी जदि होइछि नै कि सेठी भी टैक्स कर दउथि. तुमर लैंड अच्छी से लैंड केमिति लैंड भाई सेठी पानी आसुची इरिगेशन आसुची ना सेटा ड्राई लैंड ना सेटा वेस्ट लैंड जहाँ भी लैंड हो डायरेक्ट लैंड ऊपर टैक्स नहीं जाउथिले, नॉट ऑन द प्रोडक्शन. अर्लियर जदि मेडिवल हिस्ट्री में पढ़िया जितले इफ टाइम परमिट आई डोंट नो टाइम केतले परमिट हेबो मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िया पई. बट सेटा जो देखा तो से जो भी राजा महाराजा मैंने करते सो दे वेर यूज टू टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन केते होउची ता ऊपर एक्चुअली टैक्स नहीं होतला. बट एठी माने लैंड ऊपर ही करेंगे टैक्स. सेठी प्रोडक्शन हो न हो किसी भी हो घास भी जदि अच्छी तुम प्रोडक्शन किछ करनो मते से जगह ऊपर टैक्स दरकार. सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम वाज देयर एंड टोटली गोटे नुआ काइंड ऑफ सिस्टम ताके इम्प्लीमेंट कले जोटी कि नुआ नुआ मेजरमेंट सिस्टम नुआ नुआ ताकर पॉलिसी जाक ये पिजेंट्स एंड टेनेंट्स मन को बुझा पड़ला ये कौन करछंती से माने को हिसाब रो एटा सिस्टम को हिसाब रे ताको लैंड को मेजर करा होची तार नेचर ताको बुझी पाले नहीं. सो बहुत असुविधा है लोक मान को बहुत असुविधा होती से माने बहुत हैरान भी होती. लास्ट रेट ऑफ रेवेन्यू एते थिला कि सब रेट ऑफ रेवेन्यू ताके दे ही दउथले एंड पैसा सो तांकर जो परचेजिंग पावर बढ़िया थिला सेटा भी बढ़िला नहीं. तो एटा एते माने देखिया पे मिलला नहीं.
तो मेनली कौन देखा मिला, रूरल इंडेप्टेडनेस, राइट, सेकंड नंबर, रूरल indebtedness, rural indebtedness become a common problem, rural indebtedness become a common problem in this region, rural indebtedness become a common problem in this region. Okay, so next system was Mahalwari system, and give the heading Mahalwari system. So what is this Mahalwari system now? Now देखो जदि इंडिया, सो ये पाखे एक्चुअली आम देखलु परमानेंट सेटलमेंट, ये एरिया रे एंड दिस एरिया रे आम कौन देखलु रेतवारी सेटलमेंट। ओके, बाकी जो एरिया बड़ी जीव जोटा कि ब्रिटिशर्स मान अंडर रे थिबो, तो सही एरिया रे एक्चुअली आपको देखा पे मिल अबाउट दिस महालवारी सिस्टम, से कोडी कोडी हम से कहबी, डोंट वेरी। ओके, सो एनी इशू रिगार्डिंग ऑफ माय वॉइस और वॉइस क्रैक, किसी नेटवर्क इशू अछि? Dumbledore is saying yes, all fine. Rajesh, okay, ठीक है। So Mahalwari system, so now we will discuss about Mahalwari system। and Mahalwari system जो देखिए, टोटल ब्रिटिश इंडिया रो जति की भी एरिया थिला अप्रोक्सीमेटली 30%, ओके, 30% एरिया रे 30% एरिया ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट रो जति की भी एरिया रे थिला, इंडिया रो जति की भी एरिया, तो 30% एरिया रे तांके महालवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करथिले। मेनली हमरो जो रीजन बळी जाइतला नॉर्थ इंडिया, ओके, नॉर्थ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ओके, सेंटर रो भी किछि जगह जो मध्य प्रदेश वाला एंड फ्यू नॉर्थ रो किछि किछि जगह सीडी एक्चुअली से माने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करिथिले। एंड ये जो महालवारी सिस्टम, द फादर ऑफ महालवारी सिस्टम, राइट, द फादर ऑफ महालवारी सिस्टम इज हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी इज द फादर ऑफ महालवारी सिस्टम, जे कि महालवारी सिस्टम को तार प्रोविजन्स जाक फीचर्स जाक डिवाइस करिथिले। ओके, एंड मेनली मु कहली जो नॉर्थ रे, नॉर्थ साइड नॉर्थ वेस्ट रे एक्चुअली इम्प्लीमेंट कराइतला। सो मेनली हमर जो पंजाब वाला रीजन थिला, पंजाब वाला रीजन इवन सेतबेले गोटे प्रोविंस थिला, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन, यूनाइटेड प्रोविंस वाला रीजन, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब, सीठी एक्चुअली प्राय एटा सब इम्प्लीमेंटेशन करिया पे देखिया पे मिले। ओके, एंड ई महालवारी सिस्टम रे होउतला कोन, इडी एक्चुअली डायरेक्टली से माने देखिले कि इंडिविजुअल्स पीजेंट सहित असेसमेंट जदि करिबा लैंड रेवेन्यू, तो टाइम टेकिंग बहुत होउछ, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होउछ, प्रति घरे घरे जाओ एंड प्रति जति भी ऑफिसर अछंती से मान सहित डील करो। तो तांके कोन कहले कि टोटल गोटे आमे गोटे महल तैयारी करिया, महल, महल, महल इज द यूनिट ऑफ असेसमेंट, जोठी कोन हबो एठी महल रे बहुत गुडाए विलेजेस जाको थिबे, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके, बेले बेले गुटे विलेज ही बहुत बड़ थिला, तो गुटे विलेज को ही गुटे महल कहि दोथिले। बेले बेले छोट छोट जदि विलेज अछि, सो दुई चारटा छोट छोट विलेज को मिसई कि गुटे महल कर देले। तो ग्रुप ऑफ विलेज और गुटे विलेज, ई समस्त को गुटे तांके गुटे थिबो, जेंति हमरो पंचायत, पंचायत कहूची जेंति हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी, डिलिमिटेशन कमिशन जेतबेले लोकसभा हो कि राज्यसभा पई जेतबेले गोटे पर्टिकुलर एरिया जोठू के एमपी एमएलए सिलेक्ट हेबे, सो सी गोटे जो यूनिट जे कि गोटे डिस्ट्रिक्ट भी ही पारे किंबा दुई चारटा डिस्ट्रिक्ट मिसी की भी ही पारे, सेठू एक्चुअली लोक मानकू लोक माने ठिया हुअंती फॉर इलेक्शन
एबे जेमती इलेक्शन रो माहौल अछि सो सो सिमिलरली गोटे महल रे भी गोटे विलेज भी ही पारे किंबा ग्रुप ऑफ विलेज भी ही पारे सी पूरा विलेज रो गोटे मेन मुख्य गोटे लीडर थी ओके एंड सी लीडर को हमें कहबा जो ऑफिसर्स सी ऑफिसर सहित ही डायरेक्टली से माने कोन करिवे तांकर सेटलमेंट करिवे ओके तो डायरेक्टली दे विल डील विथ द महल महल एंड महल रे जो ऑफिसर थिबो सी ऑफिसर कोन करिवो जते भी महल भितरे जते भी गाँ गड़ी अछि से मानकर सब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिवो एंड कलेक्ट करके तापर जाई सी दे देबो ओके एंड ई जो ऑफिसर थिबो ताको एक्चुअली कहै होतला लंबरदार ओके एंड ये जो प्रति विलेज रे गोटे तांकर हेड रहंती विलेज रो हेड को कहंती मुकदम सो दिस मुकदम प्रति विलेज रो हेड से कोन करिवो प्रति विलेज रो समस्तंकर लैंड रेवेन्यू से ही कलेक्ट करिवो देन मुकदम तापरे लंबरदार को दे देबो ओके सो लंबरदार वाज ए सेटलमेंट ऑफिसर वी कैन से एंड दिस ऑफिसर को हम सेटलमेंट ऑफिसर भी हम कहि परिबा सेटलमेंट ऑफिसर जे कि लैंड रेवेन्यू को सेटलमेंट करूची ओके सो ये हमको मेनली जमींदारी सिस्टम एंड महलवारी रयतवारी सिस्टम बोथ रो गोटे मिक्सचर टाइप ऑफ जिनस ये देखिए मिल ओके टोटल ये गोटे विलेज कम्युनिटी सहित ही डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हेबो एंड इवन ये भी जिनस थिला कि रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू कुड बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू को पुणी टाइम टू टाइम हमें रिवाइज भी करि परिबा से भी प्रोविजन एक्चुअली ये देखिए मिल ओके सो राइट डाउन the land revenue settlement write down the land revenue settlement was made with a village the land revenue settlement was made with a village The land revenue settlement was made with a village or a body of co-sharer and a group of villages type of or a body of co-sharer okay next point right normally the land revenue was collected last water एटा a body of co-sharer COSHARER or a body of co-sharer next slide normally land revenue was collected through the support of a mukaddam normally the land revenue was collected through the support of mukaddam ro bracket likhantu head of the village head of the village head of the village okay next slide there was a provision for individual responsibility माने responsibility of that settlement officer okay but the individual responsibility was also there कि जदि ये जो महल अच्छी बा विलेज अच्छी से गोटे लोक सहित डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स माने सेटल करूथुए दिस इज द सेटलमेंट ऑफिसर दिस इज द ब्रिटिश ऑफिसर
से आठू एक्चुअली पैसा नहीं जाऊे बट ये तो बहुत गुड़ाए लोक मैंने अच्छा एंड सब बहुत गुड़ाए लोक मानकर भी से जब आपको दौना सो देर वाज आल्सो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्चुअली माने इंडिविजुअल पेजेंट्स भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली रोचे सो देर वाज आल्सो ए प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल responsibility. Okay, next, right, the rate of land revenue had to be revised the rate of land revenue has to be revised from time to time. The rate of land revenue had to be revised from time to time. तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो गलती करते सी गलती को आउथरे से माने रिपीट करू नाहंती कि जदी प्रोडक्शन बढ़िबो सो लैंड रेवेन्यू भी बढ़िबो ओके तो सी हिसाब रे तांके सब जिंस को नेकी चलतंदी so what was the objective, right, to meet the rising expenditure of expanding British Empire. To meet the rising expenditure of expanding British साम्राज्य बढ़ुचे कंटिन्यूअसली आम देखिलु कि ई टाइम रे टोटली ऑल ओवर इंडिया को तांके कैप्चर कलेनी प्लस इंडिया रो एडजॉइनिंग एरिया को कैप्चर कले तो गोटे तापाई बहुत गुड़ा खर्च हुए तो ये खर्च को केमिति हमको काढ़ियार अछि so meet the rising expenditure of expanding British Empire. The second thing is to invest in British industrialization to invest in British industrialization because the phase was about industrial phase so mainly raw materials part आसीबो ओके मार्केट काहा को करियर अछि द ऑब्जेक्टिव वाज दैट सो मेनली अधिक पैसा आसीबो तो अधिक इंडस्ट्री जाको से माने खुलिबे अधिक प्रोडक्ट तयारी हेबो अधिक रु अधिक पुणी आउथरे से साइकिल रिपीट हेकी प्रॉफिट मिलिबो सो टू इन्वेस्ट इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके तो फालतू फालतू युद्ध करुले मैंने एंड फालतू फालतू रे पैसा दरकार पड़ूला एंड फालतू फालतू रे जो पैसा दरकार पड़ूला तापाई तांके रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू को एक्सऑर्बिटेंट हाई रखुले माने अधिक रु अधिक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करुले एंड बिकॉज ऑफ दैट द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो एते हाई थिला तापाई बहुत गुड़ाए सब प्रोविंस बहुत गुड़ाए विलेजेस बहुत गुड़ाए टेनेंट्स पीजेंट्स माने सफर करथिले लास्ट रे बिकॉज ऑफ दिस मालवारी सिस्टम अवध रे एक्चुअली एते लास्ट रे असुविधा हेबो रूरल इंडेप्टेडनेस हेबो कि जेतबेले पानी नाकर ऊपर जाए तो जिनस कौन हेबो रिवोल्ट देखिया पे मिलिबो सो जो 1857 रो रिवोल्ट रो गोटे कारण होची ब्रिटिशर्स मानकरी पॉलिसी जोठी कि 1857 आसु आसु लोक माने एक्चुअली बहुत ही हैरान हो जाइतिले एंड जेतबेले बहुत हैरान हो जाइतिले तो तांके रिवोल्ट कर देइथिले सो 1857 रिवोल्ट रे बहुत बड़ा जेतबेले रिवोल्ट हैला तो लोक माने जो पूरा गरम रक्त थिला तांके सेमानक हाथ रे किछ नथिला पैसा सब पळुतला तो तांके भी सपोर्ट देइथिले इन दिस ग्रेट रिवोल्ट एंड मेनली दिस अवध वाला रीजन ये तो बहुत ही इफेक्ट हो जाइतिला बहुत तारो क्रिटिकल कंडीशन पड़ा आस्थिला सो राइट द इम्पैक्ट
and impact लिखंदु in this system the rate of land revenue was exorbitant high. In this system, the rate of land revenue was exorbitant high. Affecting the region, especially Awadh, which proved much volatile, at the time of Great Revolt of 1857. Volatile माने जोटा कि माने स्टेबल नहीं, जमी पेट्रोल डीजेल बाहर रखु volatile उड़ी जीवो, तो सेमिति अवध भी बहुत अनस्टेबल हो जाइथिला से टाइम रे एंड ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 रे भी तार योगदान देखिया पे मिले. तो मेनली तांकर थिला कि हमरो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन केमिति अधिक हबो, हमको लार्जर रिसोर्सेस क्वाडू मिलबो, हमको अधिक पैसा क्वाडू मिलबो, तो ताके इंटरमीडिएट्स मान को तो साइड कले प्लस निजे एते एते पैसा मागिले एंड एते सब टैक्स कलेक्शन कले कि लास्ट बहुत हैरान देखिया पे मिले. लास्ट इज दिस ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 कि हमें देखिबा आफ्टर दिस फेज. Okay, so this was the major administrative policy and administrative changes in this industrial phase. Next is about economic policy of industrial phase. So economic policy of industrial phase रे आमे पूरा तांकर इकोनॉमिक पॉलिसी मेनली तांकर इकोनॉमिक मोटो अधिक थिला. ओके, तो एठी मेनली इंडस्ट्रियल फेज रे हमको देखिया पे मिलियो कि हमरो इंडियन इकोनॉमी को डीपली इंपैक्ट देखिया पे मिलियो. ओके, हमरो एग्रीकल्चर को रे इंपैक्ट देखिया पे मिलियो, हमरो निजरो जो क्राफ्ट बा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थिला ताकू इनफेक्ट हेबो, हमर जो ओरिजिनल ट्रेड होतला से ट्रेड रे को इंपैक्ट पड़ियो एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंपैक्ट अछि जोटा कि हमें डिटेल्स हेबे नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा. ओके, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दिस इंडस्ट्रियल फेज एंड आफ्टर दिस इकोनॉमिक पॉलिसी सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी देखिबा एंड देन हमरो तापरे 1857 रो रिवोल्ट स्टार्ट करिबा एंड देन तापरे 1857 रिवोल्ट पर जो फाइनेंशियल फेज अछि ताको भी पढिया. ओके, सो कहार किस डाउट अछि यू कैन आस्क नाउ. सर लॉर्ड हॉस्टिंग का टाइम पीरियड कौन कहले? लॉर्ड हॉस्टिंग का टाइम पीरियड. लॉर्ड हेस्टिंग हमर पॉलिटिकल पॉलिसी रे तो लिखि थिबा आपण. दिस इज द टाइम पीरियड. लॉर्ड हेस्टिंग तो पॉलिटिकल पॉलिसी रे हम ये लिखि सरछु कोन टाइम पीरियड है. सर लॉर्ड विलियम बेंटिक रे जो सोशल रिफॉर्म का कहले पिन पॉइंट कहले सेटा तो सर बहुत बड़ा इंपोर्टेंट भी अछि ओ सब पॉइंट को अपन फ्री कॉलेज हम जो लैंड तक पर कहले तो पॉलिसी का बड़ा थिला पर भी और विशेष लॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव हो तो एजुकेशनली बहुत बड़ा काम कर. Jagannath, इंपोर्टेंट आसी नहीं क्वेश्चन में. Jagannath, you are not audible actually. Voice is cracking. कोर्टली सर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक तारा बहुत बड़ा रिफॉर्म अछि सर. रिफॉर्म भीतर हमें लैंड रिफॉर्म का बड़ा
बहुत भल भी लगे सोशल रिफॉर्मटा पिन वॉइस इज क्रेकिंग जगन्नाथ ऊपर भी करते काम मेनली बहुत गुड़ा रिफॉर्म्स भी अच्छी एजुकेशनल रिफॉर्म्स एजुकेशन रिफॉर्म कर प्रेस रे रिफॉर्म कर सोशल जिनस रिफॉर्म कर एंड भी बहुत जिनस अच्छी बट ताको आम सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी सी सब देखा आम ओके डोंट वेरी सोशल पॉलिसी एंड कल्चरल पॉलिसी रे भी से सब जिनस आसो एडमिनिस्ट्रेशन रे जो जिनस एक्चुअली मेनली जोटा कि जुडिशियल एंड आमर लैंड रेवेन्यू जुडिशियरी जिनस हूँ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन मेन काम हूँ लॉ एंड ऑर्डर को केमती संभाळिबा एंड मेनली टैक्स कलेक्शन केमती आसो दैट इज मेन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओके तो इफ यू विल सी इफ यू विल क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज हमर जेमती सिविल सर्वेंट मानकर इंडियन मानकू प्रथम थर पर चांस मिलता जोड़ा कि जॉब करिया चांस वॉल्यूम मेंटेन देथले कि एमिति जो सर पिन पॉइंट उडाक माने सर आउ होता एग्जाम सर जो क्वेश्चन हम लिखिबो तो सेटर केते स्किप करा पड़े और तार कोन पैटर्न रहइबो आ क्वेश्चन केते आसी परिबो जति कि लॉ वॉल्यूम मेंटेन का सोशल से हो क्या एजुकेशन की लैंड रिफॉर्म क्वेश्चन लंबा ही जाउची माने वॉइसटा बाकी क्रेक होगी आसूँ मुझे एक्चुअली एज्यूम कर क्वेश्चन टा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द प्रीलिम्स एंड मेंस राइट क्वेश्चन क्वेश्चन जो आसीबो सेटा ओपीएससी एंड यूपीएससी रे डिफरेंट रोच ओके बोथ प्री एंड मेंस रो सो इफ यू विल सी ओपीएससी तो डायरेक्ट क्वेश्चन जाको प्राय दौला द प्रीवियस थर जदि प्रीलिम्स देखिए तो सही टिके चेंजेस आछे ड्रास्टिकली चेंजेस आछे बट जेनराली एबे ओपीएससी रो प्राय सब क्वेश्चन जाको एते डेप्थ इन डेप्थ आसुनी डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जाको प्राय बेसी आछे और जदि हिस्ट्री को देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आसुची एथरा हाँ प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसला बट स्टेटमेंट रे भी एते भी आपन को भाबिया को पड़िबो नै ओके जेते यू ओडिशा हिस्ट्री रो सर बेसी आसुची ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन जाको पड़े सर जेते हम मेंस आंसर राइटिंग करियो तो एटा जेतु गोटे 5 6 पेज हे जाउ तो एंटी क्लास तो हम तो 3 4 पेज भीतर कवर करियर अछि केना हम टाइम भी प्रेफरेंस तो दो पड़े तो सही सर क्वेश्चन को केते कि सर केमती केमती एटा तो बहुत सारा क्लास रे क्वेश्चन केमती केते मिनिमाइज हे परियो आ केते इंडेप्थ को जीवा पड़े आ केते माने शॉर्टकट हे करे पड़े ते भी गोटे सर ई डाउट थिला टिके सर ओके लिसन मु एक्चुअली किछि होमवर्क रे क्वेश्चन देबी ओके किछि क्वेश्चन दउथिबी एंड यू ट्राई इट एट योर होम ओके एंड देन तार फॉर्मेट कौन रहबो मु तापरे ताको डिस्कस कर देउछि नेक्स्ट क्लास रे ओके सो यू विल गेट एन आइडिया टू हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस ओके फॉर मेंस स्पेशली तो मेंस में इडा हमें जेतोल करिवा डेली गुड दुटा क्वेश्चन जाको मु एक्चुअली देबी ओके एंड ताको निजे प्रैक्टिस करंतु एंड तापरे मु तार अप्रोच कहबी कि को हिसाब रे ताको केते वर्ड लिमिट रे को कंटेंट रहइबो से सब मु एक्चुअली जेतोल बतेबी सो यू विल गेट ए डेफिनेटली गोटे आपन को से आइडिया टा पळे आसीबो कि को हिसाब रे अप्रोच टा रखिर अछि फॉर द मेंस आंसर राइटिंग ओके एंड फॉर प्रीलिम्स में देखंतु क्वेश्चन जाको इफ यू विल सी मिडिएवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री सो जेते भी पढ़ंतु बहुत गुडा क्वेश्चन जाको बाहरु भी टिके आछे ओके इवन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो भी किछि जिंस जाको टिके आपन को लागियो बाहरु आसीछि ओके बट जिंस कोन करियर अछि हमकु गोटे बाउंड्री तयारी करके पाठ पढ़ियार अछि ओके बिकज पाठ बहुत जिंस अछि बहुत गुड़ाए जिनस पाठ अच्छी जहाँ भी जिनस पचारि पार देर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस कमिशन यूपीएससी एंड ओपीएससी से किसी रेस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं कि तुम एति भितर ही पाठ मैंने पचार अच्छे तो से मैंने जुआडू भी पचारि पारे बट मनकर ओपीएससी एति जिनस पचार बा यूपीएससी सो बट यू हैव टू फिक्स ए बाउंड्री कि आम एति पढ़ियार अच्छे एंड फ्रॉम दिस जिते भी जिनस पलि आसो तो हमको मिनिमम क्वालिफाई करियर अच्छे प्रीलिम्स रे भी देखंतु कट ऑफ केते जाउची यूपीएससी रे एबे तो 75 समथिंग
कट ऑफ आसी यूपीएससी रे द लोएस्ट एवर कट ऑफ। सो ओपीएससी रे भी बहुत कम आसी सेम आसी 75 ना 65 हो जाइए। अच्छा जहाँ भी देखिए बट जनरली कट ऑफ टा आपनकर जो देखिए 70 ରୁ 80 पळे आसलानी ओपीएससी एंड यूपीएससी बोथ फ्रॉम 200। सो सबू जिनस जहाँ भी क्वेश्चन आसुची सबू जिनस आमको जानवर अच्छी बा सबू जिनस आम पढ़ी की जीवा सेमिति किछि नाही। तो आमको कौन करियर अच्छी जहाँ सार पढ़ाऊँच जहाँ इंस्टीट्यूट रे पढ़ाला प्लस जहाँ भी मटेरियल दिहला आपने सेतिकी कवर करंतु बारंबार पढ़ंतु से भितरु ही ऑटो जदि पढ़ी तो यू विल एबल टू क्वालिफाई द कट ऑफ जहाँ भी कट ऑफ थी ताको आपण क्वालिफाई करि परिबे। किए भी आपन को टोटली गारंटी देबो नहीं कि 200 ରୁ 200 क्वेश्चन सॉरी 100 ରୁ 100 क्वेश्चन ताके जहाँ पढ़ेबे सब जिनस पढ़े आछे ओके। बट हाँ जहाँ भी कट ऑफ को क्वालिफाई करिया पई जेतिकी जिनस दरकार से जिनस एठी मिलबो आपन ओके। एंड सेतिकी बाउंड्री गुडे तैयार करके पाठ पढ़ियार अछि बारंबार रिवाइज करियार अछि एंड यू विल डेफिनेटली एबल टू क्वालिफाई द कट ऑफ। जदि मटेरियल जहाँ भी दिया होछि सेटा पढ़िबे एंड नोट्स जहाँ भी एठी दिया होछि सेटा पढ़िबे सो प्रीलिम्स आराम से कट ऑफ को क्वालिफिकेशन ही जो। हेलो या जस्ट वेट जस्ट हेलो सो बाकी हेलो मेंस रो हाँ हेलो टिके रुहंतु सर सर सुबल सर टिके रुहंतु। सो प्रीलिम्स रो जिनस एडा ही जहाँ भी जिनस पढ़ा होछि प्लस मटेरियल दिया होछि ताको फॉलो करंतु। तो मु कहबिनी कि टोटल क्वेश्चन जहाँ भी आछि सब जिनस पढ़े आसीबो बट या मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन एबल टू क्वालिफाई द कट ऑफ। रहिला मेंस रो क्वेश्चन जाकर एमती करिया मु किछि क्वेश्चन दउथिबी एंड देन आई विल डिस्कस इन द क्लास एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन कौन कंटेंट रहिबा दरकार कौन स्ट्रक्चर रहिबा दरकार से जिनस आपन को आइडिया पळे आसीबो ओके। सो ता पई भी किछि क्वेश्चन जाको मेनली डिस्कस करिबा एंड आउ गोटे जिनस आमे जो जिनस बे पढुछु 1757 रू सर प्रैक्टिस से चला पड़े तो हमें जहाँ भी पढ़ी थी सर कहीं एनएस लागू नहीं थी जो प्रैक्टिस से ना जल्दी इकोनॉमिक्स से माने स्टडी रिलेटेड तो बहुत बेसिक आउट ऑफ करे सर करे को कोई जगन्नाथ you listen जगन्नाथ this is my number okay this is my WhatsApp number your voice is actually cracking and I am not able to listen you properly I don't know समस्त को सेमिति समस्त को पई सेटा वॉइस क्रेक होची ना मो पई ही क्रेक होची ठीक एनीवन कंफर्म Yes, sir. Correct होची sir. वॉइस टा एक्चुअली ब्रेक होची जगन्नाथ सो आई एम नॉट एबल टू हियर यू दिस इज माय WhatsApp नंबर एंड यू जहाँ भी क्वेरी अच्छी से पचारतु आई विल एड्रेस इट ओके। आउ किसी कार डाउट सुबल यू से व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग सुबल सर नमस्कार हाँ हाँ नमस्कार कुंदू हेलो यस सर यूर मोबाइल नंबर आपन की हाँ दिस इज माय WhatsApp नंबर ओके। सर गोटे मोर डाउट थिला कि सर जो रिकॉर्डिंग क्लास नहीं ता केंती करबा सर मते तो दरकार थिला कि जो आपन केतरा